एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स आर्ट वर्ल्ड। आज मैं कुछ अलग सा क्राफ्ट कर रही हूँ। आज मैं एक टिश्यू को यूज़ कर रही हूँ एक बॉक्स पे, और मेरे पास एक बॉक्स था जिसे मैंने सुंदर से टिश्यू से डेकोरेट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बॉक्स पे जेसो लगाया है, जिसको मैंने सोचा वाइट कलर करते हैं इसको, क्योंकि मेरा जो टिश्यू है उसका बेस वाइट था। इस वजह से मैंने पूरे बॉक्स पे वाइट जेसो लगाया है और इसे स्पंज की हेल्प से पूरा स्प्रेड कर दिया है और बहुत ही अच्छे से स्प्रेड होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना इसको। और यहाँ पे मैंने लिया है ये प्यारा सा टिश्यू जो कि वाइट और पिंक में है। तो मैं इसके बॉर्डर को यूज़ करूँगी और वो किस तरह से यूज़ करना है इस बॉक्स पे वो आप देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लिया है, कैनवस बोर्ड के ऊपर इसे फैला लिया और फिर यहाँ पर पानी की हेल्प से मैंने ब्रश में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के और यहाँ पे इसको कट करने के लिए ट्राई किया है। और आप इसको जब अब ये गीला हो जाए ना, बहुत ही केयरफुली आप इसको निकाल सकते हैं अच्छे से। और आपका जो भी डेकोपेज के जो भी डिज़ाइन हो उसके आसपास ही आपको हल्का हल्का थोड़ी सी दूरी पे पानी लगाना है आपको और उसे निकाल लेना है।
यहाँ पे मैंने डेकोपेज ग्लू यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल ग्लू जो हमारा फेविकॉल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बस पे थोड़ा पानी मिला लीजिएगा, बहुत डार्क हार्ड ना हो वो।
सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।